Okay, good evening dear student. Today I am going to discuss one of the interesting chapter from Kaveri book of class 9 or grade 9. Those who are studying in class 9 of CBSE course, then for that student this video will be very helpful. Dear friend, आउ आमे दुईटी लैंग्वेज व्यवहार करबा जोटा कि इंग्लिश एंड ओडिया आउ ए बही देखंतु कावेरी बही क्लास 9 रु सीबीएसई पैटर्न तो आमे एटा एनईपी 2020 अनुसार जो बही गुड़ाक सब चेंज होइछि सही पाठरू आमे अध्ययन करबा आउ ए पाठ बा ए कावेरी बही रे कौन कौन अच्छी जस्ट टिके आपण देखि नियंतु किछि चैप्टर को देखि नियंतु जे चैप्टर गुड़ाकर कौन कौन देछि राइट लुक एट दिस तो एठी अछि प्रथम पाठटा हाउ आई टॉट माय ग्रैंड मदर टू रीड देन ता तले गोटे पोएट्री अछि भारत आवर लैंड राइट तो आमे एठी आमे पढ़िबू कौन भारी इंटरेस्टिंग पोएम स्टोरी very beautiful story how I taught my grandmother to read right so how I taught my grandmother to read এই পাঠটি পড়িবা প্রথম পাঠ স্টোরি এক্সিলেন্ট স্টোরি जो स्टोरी रे कि गोटे 62 years old woman को गोटे 12 years old ओके years old girls केमिति करिछि ओके गोटे ओल्ड गर्ल केमिति ताकू पढ़ाई से विषय रे आमे अध्ययन करिबा आउ ए पाठ अति इंटरेस्टिंग जो पाठ कौन कही थाए जे कौनसी पाठ पढ़िबार कौनसी सीमा न थाए बयस सीमा न थाए बा कौनसी शिक्षार कौनसी शिक्षा देबार बा गुरुर बा टीचर कौनसी बयस न थाए द स्टूडेंट में be the age of 62 or the student may be a very child okay a student a teacher may be a child or student may be a old person right does not matter the age gender caste anything it is a very beautiful story so without delay let's get started I am going to discuss it very clearly one by one okay stanza by line by line stanza by stanza everything so look at this here from this picture you can see that how I taught my grandmother to read dear friend so you can see the title of the story what how I can taught or how I taught my grandmother to read dear friend see जे मु मोर ग्रांडमदर मोर जेजेमा को केमिति पढ़ाइबार सिखेली से विषय अच्छी आउ को लिखी सुधा मूर्ति द राइटर ऑफ द स्टोरी इज सुधा मूर्ति राइट द राइटर ऑफ द स्टोरी इज सुधा मूर्ति जस्ट वेट ओके सुधा मूर्ति राइट हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी सुधा मूर्ति राइट तो सुधा मूर्ति has written the poem story very beautifully so you can see that one complete the given words wave तो एठी किछि गोटे वर्ड वेब पिला मान को पई दिया जाईछि why is it important to learn how to read and write पढ़िबा और लेखिबा सिखिबा जे केते इंपोर्टेंट तमे ए जगह रे लेखिबो राइट एठी सेकेंड रे कौन देला सेकेंड रे देछि रीड द क्वेश्चन गिवन बिलो एंड शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर डियर फ्रेंड एठी ए क्वेश्चन को पढ़ एवं तमर सहपाठी क्लासमेट मान सहित एवं शिक्षक मान सहित ता आंसर को डिस्कस कर एठी प्रथम प्रश्न अछि Which language or languages do your grandparents or elderly relative speak? जे जो वयस्क तमर जेजे माँ जेजे बापा बा तम रिलेटिव मानकर वयस्क लोक माने को भाषा बा भाषा गुड़िक कहती को भाषा गुड़ाक यूज करती क्वेश्चन नंबर 2 हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम एंड हाउ डू स्पेंड टाइम विथ देम हाउ डू यू स्पेंड time with them
जे से माने दे माने किए एल्डरली पर्सन एल्डरली या आवर ग्रांड पेरेंट केमिति तांकर समय कटांती एवं तुमे तुमे माने किए द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 ओके स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 तुम मानक पई कुहा जाउछि जे तमे सेही एल्डरली लोक मानक पाखरे केमिति समय कटाई थाओ 3 नंबर प्रश्न पचारला व्हाट इज योर फेवरेट एक्सपीरियंस विथ देम तमे जेते बिले एल्डरली लोक मानक पाखरे थाओ या तुमर ग्रांड पेरेंट पाखरे थाओ सेते बिले तमे को अनुभूति तुमर फेवरेट एक्सपीरियंस कोन थिला कोन थाए राइट देन क्वेश्चन नंबर 4 what is something that elderly in your family cannot do easily but enjoy watching you do तो तम घर जो वयस्क लोक माने थांती से माने को जिनिसटा करि पारंती नाही एवं जहा कि तमे करबा बेले देखि कि तुमको देखि कि बहुत खुशी होंती एठी चारिटी क्वेश्चन देछि ए क्वेश्चन गुडा का बहुत ओके इंपोर्टेंट try to discuss with your friend and with your teacher right now I am going to discuss about the story here okay you can see that read the following spaces was the highlighted words with their meaning given in the text below right so here एई पैसेज को आमे पढ़िबा एवं जो हाइलाइटेड वर्ड गुडा को देछि ताहा को आमे कोन करिबा तार मीनिंग गुडा को जानिबा जेमिति कि एटी गोटे प्रथम वर्ड देछि एक्साइटेडली नंबर 2 बिलीवेबल नंबर 3 पीपल लिविंग इन वन पर्टिकुलर एरिया then number 4 discussion number 5 a part of a story number 6 focus number 7 the main character and number 8 directed right so here some word we shall discuss word by word right and we will discuss the story very clearly please keep watching the video okay till the end so that you will get lot of information definitely see here the casting for the protagonist of our school annual play was done after a lot of debate as many as good actors had audition for the role see एटी कोन गोटे कास्टिंग थिला गोटे प्रोटागनिस्ट मान थिला हम स्कूल रो जो एनुअल प्ले थिला एनुअल फंक्शन थिला बा एनुअल गेम थिला सेठी गोटे हमर बहुत कोन हैला जे लॉट ऑफ प्रोटागनिस्ट मीन सेंट्रल कैरेक्टर जो माने प्ले करिथिले बहुत गुडा डिबेट कंपटीशन हेतिला किए भल कैरेक्टर थिला किए भल ऑडिशन देथिला ता विषय थिला एंड वी हैड डिसाइडेड टू प्रेजेंट एन एपिसोड फ्रॉम एन इंस्पिरेशनल स्टोरी आमे मध्य प्रेजेंट करू जो गोटे कोन गोटे इंस्पिरेशनल स्टोरी को नै कि गोटे एपिसोड वाइज आमे ताको प्रेजेंट करि थाउ बा करिथिलु राइट एंड वाज लाइफ स्टोरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन हु वर्कड विथ द कम्युनिटी टू स्प्रेड लिटरेसी जो कौन होता ये द स्टोरी कौन थिला चिल्ड्रेन मानक द्वारा काम करा जाउथिला एवं जो गोटे चिल्ड्रेन कम्युनिटी रो चिल्ड्रेन मानक भितर लिटरेसी को केमिति प्रोत्साहन करा जिवो लिटरेसी को केमिति वृद्धि करा जिवो स्प्रेड करा जिवो लिटरेसी माने कौन साक्षरता को केमिति वृद्धि करा जिवो एवरीडे वी रीच टू स्कूल अर्ली टू प्रैक्टिस विथ कंसंट्रेशन आमे विद्यालय को आगतरा पहुंची जाऊं एवं ग्रेट कंसंट्रेशन सहित बा एक लय रे आमे प्रैक्टिस करी थाऊ we waited eagerly for the final presentation एवं आमे समस्ते eagerly waiting करी थाऊ जे फाइनल प्रेजेंटेशन टा केमिति हेबो जेमिति आमे जो रेलसेल करी थाऊ एवं फाइनल प्रेजेंटेशन टा दे थाऊ सेते पई छात्र छात्री बहुत आग्रह सहित थांती all of us played our role in a very convincing manner right you can see that as our theater teachers had guided us well
तो सी कहले जे आमे समस्ते आग्रहर सहित वेटिंग करि थाउ जे फाइनल प्रेजेंटेशन हेबो केमिति एवं आमे कहि कि आमे ऑल ऑफ अस प्लेड आवर रोल इन अ वेरी कन्विंसिंग मैनर बहुत सुंदर भाबरे आमे रेलसेल करितलु सुंदर भाबरे आमे निजर रोलटा प्ले करितलु जेमिति कि आमर जो थिएटर शिक्षक नाटक शिक्षक आमको कौन गाइड करथिले जेमिति शिखैथिले सेमिति आमे परफॉर्म करिथिलु राइट इटा जस्ट कौन थिला एटा टिके स्टोरी विषय टिके थिला ता कहानी विषय थिला किंतु प्रथम पाठ एठू आरंभ हैला प्रथम पाठ रीडिंग फॉर मीनिंग ए मीनिंग टा आमे पढ़िबा एठू आमे आरंभ करिबा कोन आरंभ करिबा पाठटी हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड यहाकू पढ़िबा ओके लेट्स सी व्हेन आई वाज ए गर्ल of about 12 I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents see in the first line कौन कहूँ when I was a girl when I means narrator what narrator means what one who is speaking the story the narrator is saying that she was a girl about 12 years old केते 12 वर्षर झियोटी से थिला राइट 12 वर्षर झियोटी थिला एवं से यूज्ड टू स्टे से कोठे रहउथिले नॉर्थ कर्नाटक रे रहउथिले कोठे रहउथिले नॉर्थ कर्नाटक रे रहउथिले कहा सहित रहउथिले ग्रैंड पेरेंट्स सहित रहउथिले those days say dinore when the narrator was in 12 years old or was a child at that time those days the transport system was not very good ट्रांसपोर्ट सिस्टम एते भलो नथिला सो वी यूज्ड टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन आफ्टरनून जो सकाले सकाले जो मॉर्निंग पेपर दिया जाउथिला से पेपरटा आफ्टरनून रे दिया जाउथिला उपरली दिया जाउथिला मॉर्निंग रे से माने पाउ नथिले बिकॉज़ व्हाई बिकॉज़ द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वाज नॉट अवेलेबल और नॉट गुड द वीकली मैगजीन यूज्ड टू कम वन डे लेट आउ जो मैगजीन गुडाक आसुतला मैगजीन माने जोटा कोन गोटे पुस्तक बा गोटे स्टोरी बा कोन गोटे एपिसोडिक भाव में लेखा जाय थाए से मैगजीन गुडाक गोटे दिन लेट रे आसुथिला राइट न्यूज पेपरटा सखालटा आफ्टरनून रे आसुथिला एवं वीकली मैगजीन गोटे दिन लेट रे आसुथिला राइट all of us would wait eagerly for the bus समस्ते बस को इगरली बा उत्कंठार सहित आग्रहर सहित से माने अपेक्षा करि थांती जे केते बेले हमर उपरली न्यूज पेपर आसीबो एवं जो मैगजीन टा आसीबो सेते केमिति हम बस रे आसीबो से माने उत्कंठार सहित आग्रहर सहित उद्दीपनार सहित वेट करि थांती एंड वी यूज्ड टू कम ओके व्हिच यूज्ड टू कम विथ द पेपर्स एंड वीकली मैगजीन एंड द पोस्ट जेमिति कोन पेपर आसीबो सेठी वीकली मैगजीन आसीबो एवं गाँ लोक मानक पई जहा पोस्ट गुडाक आसीबो जे चिठी पत्र के पठाइथिले आसीबो ताहाकु से माने कोन करिथांती आग्रहर सहित अपेक्षा करिथांती एट दैट टाइम सही समय रे कोन हेछि त्रिवेणी वाज ए वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज सो ए समय रे कोन त्रिवेणी बोली जणे लोक थिले राइटर थिले शी वाज वेरी पॉपुलर writer who was the very popular writer at that time Triveni and in which language she used to write the Kannada language what Kannada language she used to write in Kannada language and she was a very popular writer and she was a wonderful writer she was very wonderful writer she used to write very wonderfully right and her style was easy to read and very convincing dear friend her writing was very interesting and very easy because she was using very simple word and very convincing that means the people were enjoying to read her writing and her story usually dealt with complex psychological problem in the lives of the ordinary people and were always very interesting dear friend wow very beautiful sentence जे तार जो लेखा हार मीन्स किए त्रिवेणी रो जो लेखा जो स्टोरी गुडा को लिखुतिले गप गुडा को लिखुतिले यूजुअली कहा सहित डील करूथिला साधारणतः गोटे कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स माने जटिल साइकोलॉजिकल मीन्स व्हाट साइकोलॉजिकल माने मानसिक प्रॉब्लम माने समस्या जो माने अति जटिल
जटिल मानसिक समस्या भोगुले कौ माने जो मानकर जीवन ऑर्डिनरी पीपुल कॉमन पीपुल एंड साधारण लोक माने जो जटिल समस्या सम्मुखीन होते तांको विषय ए स्टोरीटा लिखा जाए. सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी फैंटास्टिक एंड वेरी वंडरफुल राइटिंग ऑफ the writer Sudhamurti, sorry, the Triveni. Okay, Triveni was writing very nicely, right? Now move to the another paragraph. Unfortunately for the Kannada literature, she died very young. Okay, it is a very tragic moment happened to the people of Kannada people in the Kannada literature. What happened? Unfortunately, durbhagyavasatah, okay, ill luck, right? The Triveni died. Who died? Triveni died in very young. And even now, after 40 years, okay, even now, after 40 years, say, she passed away, okay, passed away before what? 40 years. Still today her writing was very popular. Even now after 40 years people continue to appreciate her novel. जो नोवेल गुड़ाक से लिखती ता नोवेल को पीपुल एप्रिशिएट करुथांती प्रशंसा करुछंती एवं ता लेखा ता स्टोरी नोवेल पढ़िबे माने लोक बहुत खुशी हो जाउछंती. राइट. आई होप दैट यू माइट हैव अंडरस्टूड टिल नाउ. राइट. सो एठी आमे देखिलु जे गोटे 12 वर्षर झियोटी कौन नेरेट करुच्ची से समय तांकर पेपर गुड़ाक आसूला. ओके, मॉर्निंग पेपर टी आफ्टरनून रे आसूला एवं वीकली मैगजीन वन डे लेट रे आसूला. त्रिवेणी गोटे, ओके, त्रिवेणी जड़े पॉपुलर राइटर थिले एवं त्रिवेणी राइटिंग अति साधारण लोक मानकर जो जटिलपूर्ण जीवन यापन को से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को से वर्णना करुले एवं अनफॉर्चुनेटली ए कन्नड़ लिटरेचर गोटे विषादकाय जिनिसटा होइछि जहाँकि त्रिवेणी अल्प बयस से यंग समय मृत्युवरण करिसंती. किंतु 40 वर्ष हेबा सते मध्य तांको लेखारे कोनोसी दाग है नहीं. आज मध्य ता नोवेल गुड़ा को लोक माने प्रशंसा करुछंती एप्रिशिएट करुथांती. राइट. ओके, तापर कोन होइछि one of her novels ता नोवेल मानक भितरे गोटेर नोवेल रो ना होछि काशी यात्रा. व्हाट? काशी यात्रा गोटे one of her novel. कार नोवेल? त्रिवेणी रो नोवेल. कार नोवेल? त्रिवेणी रो गोटे नोवेल काशी यात्रा was appearing as a serial in the Kannada weekly कर्मवीर. गोटे कन्नड़ भाषा रे गोटे वीकली कर्मवीर बोली गोटे सीरियल आसुला. सेठी तार नोवेल कोटा काशी यात्राटी सेते बेले सीरियल चली थाए. देन इट वाज ए स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर ऑर्डेंट डिजायर टू गॉट ए काशी और वाराणसी. तो ये स्टोरी रे को स्टोरी रे जोटे कि काशी यात्रा जो काशी यात्रा नोवेल रे गोटे कहार विषय कह जाइछि गोटे ओल्ड लेडी गोटे वृद्ध महिला वृद्ध वयस्क महिलांकर गोटे स्टोरी अछि जे तार कोन जो वाराणसी जीवा पई काशी जीवा पई वाराणसी जीवा पई तार गोटे ऑर्डेंट. ओके, ऑर्डेंट डिजायर. ऑर्डेंट मीन्स कीन. ओके, ऑर्डेंट मीन्स कीन डिजायर. कीन माने प्रगाढ़ इच्छा शक्ति अच्छे. डिजायर मीन्स ओके इच्छा. ताऊ काशी जीवापे तार प्रगाढ़ इच्छा थाए. कौन? वयस्क लोक गुड़ाक देखि वयस्क जिते बेले लोक माने हो जाती सेते बेले कौन धर्मस्थान गुड़ाक बुली जीवापी बहुत पसंद करि थांती. एणु एई ओल्ड लेडी मध्य काशी या वाराणसी को बुली जीवापी तांकर गोटे स्ट्रॉन्ग जिजार थाए. द मोस्ट ऑफ हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य. डियर फ्रेंड, जेमिति कि आमर हिंदू धर्म रे समस्त लोक भावती जदि कौन काशी जदि जीव काशी जाइकी जदि भगवान विश्वेश्वरा को जदि आमे पूजा करिबा तेबे शेष रे कौन आमे पुण्य पाइबा बोली विश्वास करती. राइट. एंड दिस इज द ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव इन दिस her and struggle to go. There was a describe in that novel. तो सही नोवेल रे को नोवेल रे
काशी यात्रा नोवेल रे এই जो ओल्ड लेडी विषय वर्णना करा जायछि जे मु केमिति काशी जीवी एवं काशी या वाराणसी जीवी सेठी जाइकी लॉर्ड विश्वेश्वरा को कौन करी पूजा अर्चना करी शेष में कौन पुण्य पुण्य अर्जन करी बोली तार गोटे विश्वास थाए बा लोक मानकर भी विश्वास थाए एणु से केमिति असुविधार सम्मुखीन होचंती सी वाज स्ट्रगलिंग जे हाउ टू गो टू काशी काशी केमिति जीव से से स्ट्रगल करूथांते इन द स्टोरी देयर वाज आल्सो ए यंग ऑर्फन गर्ल ए स्टोरी रे गोटे कौन गोटे यंग ऑर्फन गर्ल थांते ऑर्फन माने कौन अनाथ झियो ओके ऑर्फन मीन्स अनाथ राइट गोटे अनाथ झियो थांती ऑर्फन मीन्स वन अनाथ अनाथ क्या कहबा द गर्ल्स हु हैज नो फादर एंड मदर जार माँ बापा न थांते ताको आमे ऑर्फन बोली कहि थाउ ए झियर गोटे ऑर्फन झियो ता माँ बापा केही न थांती बट हु फेल इन लव बट देयर वाज नो मनी फॉर हार वेडिंग से गोटे पुअर प्रेम रे पड़ी जाई थाए किए ए यंग ऑर्फन गर्ल वाज फॉल इन लव ऑफ ए मैन लव विथ ए मैन बट सी हैड नो मनी फॉर हार वेडिंग फॉर हार मैरिज सेरेमनी तार विवाह करबा पई ता पाखरे पैसा नथिला कहा पाखरे पैसा नथिला ऑर्फन गर्ल पर पई आ से कहार प्रेम रे पड़ी जाइथिले गोटे पुअर युवक प्रेम रे पड़ी जाइथिले हेले तार वेडिंग मीन्स विवाह करबा पई पैसा नथिला एंड इन द एंड शेष रे कोन होईची द ओल्ड लेडी गिव्स अवे हार all her saving without going to काशी जो ओल्ड मैन थिला किए जो ओल्ड मैन काशी जीवी पई स्ट्रगल करता काशी जीवा पई स्ट्रगल करूथिला से जहाँ भी सेविंग रखिथिला ताहाकु सेही ऑर्फन गर्ल को दे देला काहे कि ऑर्फन गर्ल को दे देला बिकॉज ऑर्फन गर्ल पाखरे मैरिज करबा पई पैसा नथिला एंड सी से किए ओके द ओल्ड लेडी से the happiness of this orphan girl is more important than worshipping of Lord Vishweshwara at Kashi से अति सुंदर पोएट्री कहते जदि ए ऑर्फन झीटी जदि खुशी हो जीवो तेबे काशी लॉर्ड विश्वेश्वरा को पूजा काशी रे पूजा करबा ताटू बहुत इंपोर्टेंट बहुत मूल्यवान बहुत इंपोर्टेंट बोली से कहते कि ओल्ड लेडी नाउ move to the another paragraph what is being told here my grandmother means what who is the my grandmother author okay authors or writer's grandmother right writer's grandmother is also okay Kristaka okay what is the name of the grandmother of the writer or the speaker the narrator who is the narrator here the writer I miss the writer Sudha Murthy right who is that Sudha Murthy is the writer of this story so that my grandmother means Sudha Murthy's grandmother's name is Kristaka and never went to school so she could not read. Here it is also beautiful connection between that old lady the Karamavira episode or the Kashi Jatra episode and the writer's grandmother episode right grandmother okay writer's grandmother was illiterate right so every Wednesday the magazine would come and I would read the next episode of this story to her तो सेते बेले कोन आसुथिला गोटे मैगजीन नेक्स्ट डे आसुथिला प्रति एपिसोड को मु कोन करूथिली ता पर दिन ताकू पढ़ी की सुनै दउथिली जहा फल रे कोन होथिला ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड forget all her work and listen with the greatest concentration dear friend तो जेते बेले मु
एपिसोड मैगजीन आसुथिला से एपिसोड को मु परदिन ताकू कही दउथिली काहाकू ग्रांड मदर को तो ग्रांड मदर मो पाखरे बसी जाउथिले एवं ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट रो सहित ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन रो सहित सबु जिनिस भूली जाई कि मो पाखरे बसी पडुथिले एवं मोर जो कहानी कहूथिली जो कहानी से कहानी को अति प्रांजल भाव में कंसंट्रेशन रो सहित आग्रह रो सहित एकलୟରେ से शुणु थांती लेटर she could repeat the entire text by heart तापर से कौन करे से जहाँ मु कही दो थाए ताहाकू से रिपीट करू थाए पुनरुद्धार करू थाए एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट कौन कोठी एंटायर बाय सी कुड रिपीट एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट मुखस्थ करी दउथिला कि ग्रैंड मदर ऑफ राइटर ग्रैंड मदर ऑफ द नरेटर माय ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी मो ग्रैंड मदर मध्य केबे भी काशी जाई न थले एंड सी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विथ द नोवेल्स प्रोटैगनिस्ट बट से जो काशी यात्रा रो जो प्रोटैगनिस्ट थिले से प्रोटैगनिस्ट को से कौन करि देथिले पूरा पूरी आइडेंटिफाइड कर देथिले पूरा चिन्ही जाइथिले डियर फ्रेंड प्रोटैगनिस्ट मींस व्हाट सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ ए स्टोरी सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ एनीथिंग गोटे पिक्चर देखिथिबो पिक्चर रो प्रोटैगनिस्ट कहले हीरो को बुझाई थाए आ एंटागनिस्ट कहबे बोले विलेन को बुझाई थाए राइट गोटे पाठर जदी बा गोटे नोवेल रो जो मुख्य कैरेक्टर को आमे कोन कहबा प्रोटैगनिस्ट बोली कहबा PROTAGONIST प्रोटैगनिस्ट right so more than anybody else she was the only okay one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her तो she was one most interested से एते इंटरेस्टेड हो जोथिले एते खुशी हे जोथिले एते आनंदित हे जोथिले जे मते सब बेले से पचारुथिले जे जो स्टोरी रो नेक्स्ट कोन अछि ओके से नेक्स्ट पढी देबा पय मते आग्रह सहित कहथिले सो आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रा ओके गोटे थर कौन हुए शुणी सारला परे से आग्रह सहित पचारे जे तापरे कौन हैला तापरे कौन हैला तापरे कौन हैला पूरा गोटे ग्रेट इंटरेस्ट सहित ग्रेट इंटरेस्ट या खुशी सहित से पचारू थाई एंड सी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एंड एट द टेम्पल कटियार्ड वेयर we children would also gather to play hide and seek dear friend तो जेते बिले कौन है थाए ता ग्रैंड मदर टेम्पल को जाई थांती तो जो टेम्पल थाए राइट जो टेम्पल गुड़ाक थाए जो टेम्पल रो जो अगणा थाए खोला जगह जो ओपन प्लेस थाए ताहाको आमे कोन कहबा कटियार्ड कहबा राइट द ओपन प्लेस ऑफ ए हाउस और ओपन प्लेस ऑफ टेम्पल और ओपन प्लेस ऑफ एनी बिल्डिंग इज नोन एज व्हाट कटियार्ड तो आमे जेते बिले माने लुचो खाली हाइड माने लुचिबा सिक माने पाइबा जोटा कि लुचो खाली खेलु थाउ सेते बेले मजा मजलिस रो सहित लुचो खाली खेलिबा समय रे हमर ग्रैंड मदर माने कोन करंती से माने तांकर सांग मानंग सहित गपसप करंती राइट आई होप दैट यू माइट हैव अंडरस्टूड वेरी क्लियरली अप टू दिस लेवल नाउ मूव टू दिस यू कैन सी दैट it is the temple and some women along with the grandmother of the writer is also okay gossiping and talking each other you can see okay the beautiful picture is given over here and the some girls and the children are okay playing hide and seek game right hide and seek then what has happened next आमर भी आग्रह टिके जमबा दका जे आगो को कोन अछि राइट आगो को कोन अछि हमको भी मध्य जानिबार अछि राइट she would discuss the latest episode with her friend से मध्य तार लेटेस्ट एपिसोड ता फ्रेंड मान को सहित डिस्कस करबा आरंभ कर दैछंती किए ग्रैंड मदर तांकर न्यू एपिसोड को कोन डिस्कस तांको सांग सहित डिस्कस करूछंती एट दैट टाइम I never understood why there was so much of debate about the story okay so I means the writer I means the narrator never understand रो understood है से बुझी पारिले नहीं जे काहे की
why there was much debate माने कहीं की माने प्रतियोगिता होची कहीं की बा डिबेट बा तर्क वितर्क होची ए स्टोरी विषय को स्टोरी विषय काशी यात्रा स्टोरी व्हाट काशी यात्रा ओके काशी यात्रा विषय कहीं एते वितर्क होची कारण ए छुआटा छोट अच्छी ता विषय किछि माने मुंडरे किछि नाही मैं ए बुझी पारु नथिले एणु से मैं चिंता करते जे एमिति गोटे कौन है जे स्टोरी विषय बहुत तर्क चली वंस आई वेंट टू द वेडिंग विथ माय कजिन्स एंड कजिन टू द नाइबरिंग विलेज दिने कौन होइछि नेरेटर गोटे वेडिंग पार्टी अटेंड करि थांती वेडिंग पार्टी माने कौन गोटे विवाह उत्सव रे तांकर कजिन मानकर सहित कजिन बा तांकर भाई भौणी मानकर सहित से माने कौन गोटे छुटिया माने नाइबरिंग गाँ को जाइथांती नाइबरिंग माने पड़ोसी गाँ को जाइथिले ए समय कौन होइछि इन दोज डेज ए दिन मानकर द वेडिंग वाज ए ग्रेट इवेंट से समय मैरेज गोटे माने बहुत बड़ इवेंट था मैरेज माने कौन मैरेज कहले बहुत आग्रह सहित से माने जानती वी चिल्ड्रेन एंजॉयड आवरसेल्फ थरोली आमे छात्र छात्री माने बहुत एंजॉय करू बहुत खुशी हो बहुत आनंदित हो जाइथाउ माने पूरा थरोली वी एंजॉयड ए लॉट and we would eat and play endlessly आमे बिंदास खाई बोलू बिंदास खाऊँ और बिंदास खेलू आमर एंडलेसली तांकर खेलिबार खाइबार सीमा नहीं थाए जहाँ मिलला से माने खाई पकांती एवं जहाँ पारले से खेलती पूरा हसी हसी मजा मजलिस करी करी से माने खाती और खेली बोलती एंडलेसली हैप्पीनेस वाले एंजॉयिंग एंड एंजॉयिंग who are the children okay endlessly and savoring the freedom because all the elders were busy so savoring means what enjoying it to the fullest savoring okay savoring means enjoying it to the fullest अति भरपूर परिमाण रे से माने खुशी हो जाती आनंदित हो जाती ओके देन आई वेंट फॉर द कपल ऑफ डे मु केति दिन पाई गोटे दुई दिन पाई मु जाई थाए बट एंडेड ऑफ द स्टेइंग देयर फॉर ए वीक ओके कौन होइछि देखंतु ए जो छुआ गुड़ाक कोटे गले वेडिंग पार्टी ओके गोटे गोटे गाँ को जाइछंती एवं जेते बेले से कौन मजा मजलिस खा पिया करी खेला बोला कर आसीछंती एवं जेते बेले कौन वेंट फॉर माने किछि दुई दिन किछि दिन पाई जाइछंती बट एंडेड ऑफ द स्टेइंग देयर फॉर ए वीक गोटे सप्ताह पर्यंत सेठी रही जाइछंती किए रही छंती नरेटर बा राइटर राइटर गोटे दिन बा गोटे मास रही जाइछंती कोठी वेडिंग सेरेमनी रे तो तापर कौन होइछि नाउ स्टूडेंट इट इज द वेरी टर्निंग पॉइंट विल बी कम टू द राइटर एंड ओके एंड द ओल्ड लेडी द ग्रैंडमदर यू कैन सी दैट व्हेन आई केम बैक जेते बेले मु फेरी आसिली आई माने किए राइटर किए सुधा मूर्ति राइट जेते बेले राइटर फेरी आसी छंती टू माय विलेज ओके व्हेन आई केम बैक टू माय विलेज आई सॉ माय ग्रैंडमदर इन टीयर्स से कांदू थिबार देखिले किए देखिले कौन कले किए देखिले नेरेटर या राइटर ओके कहा को देखिले ग्रैंडमदर को देखिले को अवस्था देखिले टीयर्स अवस्था देखिले कांदिबा अवस्था देखिले एंड आई वाज सरप्राइज फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन डियर फ्रेंड द राइटर द नेरेटर बिकेम वेरी सरप्राइज बहुत आश्चर्य हो गले कहीं मो ग्रैंडमदर टा कांदुचंती कारण से ता जीवन रे दिने मध्य ताकू देखी नांती जे तांकर ग्रैंडमदर कांदिबार इवेन मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन बहुत कष्टरु कष्ट परिस्थिति रे मध्य ग्रैंडमदर केबे कांदंती नाही हेले आज कोन हेला मो ग्रैंडमदर टी कांदुचंती राइट एंड व्हाट हैड हैपेंड आई वरीड मु विचलित हो गली एवं मु कहली मु निजको निजे पचारि कौन हो गला कौन होइछि मो ग्रैंडमदर को कौन होइछि जे मो ग्रैंडमदर आज कांदुछंती राइट सी नाउ सी आस्क्ड हर ग्रैंडमदर आभा व्हाट आभा इज एवरीथिंग ऑलराइट आर यू ओके सी आभा माने कौन कन्नड़ भाषा रे आभा को माँ बोली कह जाए राइट आई यूज टू कॉल हर आभा which means mother in Kannada spoken in North Karnataka. नॉर्थ कर्नाटक रे कौन करंती
आभा जोटा कि आभार माने मदर आभा मीन्स माँ को भाषा रे नॉर्थ कन्नड़ रे नॉर्थ कर्नाटक रे से माने कन्नड़ भाषा रे आभा कहले माँ को बुझे थे राइट ओके सो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड द वर्ड आभा आभा मीन्स मदर इन कन्नड़ा spoken okay then she nodded but did not reply me nodded what do you mean nodded 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 you can see me okay up and down means yes and side by side means no so if you do your head up and down that is nodded if you side by side it is also nodded so up and down means yes that means no right okay so ता ग्रांड मदर कौन कले मुंडटा नडे माँ किछि हेछि कि कोन पई कांदुछु तापर से कौन से डिड नॉट रिप्लाई से किछि कहले नाही एंड आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट मु किछि बुझी पारिले नाही एवं मु भूली गली एंड इन द नाइट ओके इन द नाइट आफ्टर डिनर राति हे गला डिनर खाइलु रात्र भोजन खाई सारिला परे वी वेर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस आमर जो ओपन टेरेस थाए ओपन टेरेस माने कौन जो घरर जो गोटे खोला जगह रही थाए जो छात उपरे सेही ऊपर टेरेस रे कौन करे आमे सुइबा पई गलु केबे सुइबा पई गलु जोटा कि आफ्टर डिनर रात्रि भोजन करबा पई आम जो घरर टेरेस रे आमे सुइबा सॉरी टेरेस रे सुइबा पई गलु एंड इट वाज ए समर नाइट एंड देयर वाज ए फुल मून एटा कौन थिला इट वाज ए समर नाइट व्हाट इट वाज ए समर नाइट ओके समर नाइट माने कौन आजिकाली जमी समर नाइट चली राइट आज डेट केते आज डेट हूँ ओके 8/5/2026 राइट 8/5/2026 तो आज केते वर्तमान आमर वेकेशन टा चली खरा छुट्टीटा चली तो यहाँ कौन समर सीजन चली राइट समर सीजन चली तो एमिति दिन खरा दिन राति रे कौन करिबा खरा दिन राति फुल मून थाए फुल मून माने कौन पूर्णिमा दिनटा थाए तापर कौन आभा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी आभा आभा माने मदर ओके ता जेजेमा आसिले एवं ता पाखरे ता नेक्स्ट टू मी माने राइटर पाखरे बसिले ओके लेखिका पाखरे बसिले एंड हार एफेक्शनेट हैंड टच माय फॉरहेड हार एफेक्शनेट मीन्स कोमल अति प्रिय जेमिति गोटे गेल्हारे गोटे लोक जेमिति कि ता मुंडरे टच करती आको जेमिति कि किस करते सेमिति मो हैंड को धरी पकेले एफेक्शनेट तार हैंड को धरिले एवं मो फॉरहेड रे कौन टे देले मो फॉरहेड को छुईले राइट फॉरहेड माने कपाल एटा दिस इज फॉरहेड ओके इट इज फॉरहेड राइट सो आई रियलाइज हार वांटेड टू स्पीक यस आई रियलाइज्ड एट दैट टाइम she want to speak something she wanted to speak me से मते किछि कहबा पई चाहउचंती बोले मु रियलाइज कली एंड आई आस्क्ड हर व्हाट इज द मैटर तापर मु पचारली जे व्हाट इज द मैटर घटना कोन हेछि बा कोन हैला राइट ओके देन ओके तापर कोन उत्तर दोचंती देखंतु ए समय रे ग्रैंड मदर okay you can see the beautiful posture grandmother is sitting and she has put her hand affectionately on the head of the girls okay at that time is girl okay the girls was sleeping on the terrace means eta mane apan dekhithebe jota ki chhatar upre okay it is called terrace khara din re se suichanti right okay then now move to the another paragraph right when I was a young girl jete bele mu young girl thili I lost my mother there was nobody to looked after and guide me okay who is talking I means grandmother right ethi I represent grandmother तार okay ता स्टोरीटा कहूँ किए कहते ग्रांड मदरटा कहते क्या कहते ये जो कुनी छुआटा को कहते व्हेन आई वाज यंग गर्ल मु जेते बेले यंग गर्ल थी छोट झीटा थी सेते बेले मोर माँ को मु हरैली माय ग्रांड मदर माय मदर को मु हरैली एंड देयर वाज नोबडी केही मध्य मते जत्न नेबा पई लुक्ड आफ्टर माने फेजल बेस टू टेक केयर लुक्ड आफ्टर मीन्स टू टेक केयर व्हाट टेक केयर
मते टेक केयर करबा पई मते जत्न नेबा पई केही मध्य न थांती एंड माय फादर ए ओल्ड मैन कहते मो बापा ओके माय फादर वाज बिजी मैन मोर गोटे बापा बहुत बिजी थांती एंड गॉट मैरिड अगेन आउ गोटे स्त्री को से बाहा हे गले सेकंड वाइफ मैरिज करी गले राइट एंड इन दोस डेज पीपुल नेवर कंसीडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर द गर्ल्स से दिन मानकरे लोक माने कोन भाबी नै थांती जे शिक्षा माने झियो पिला मानक पई शिक्षा एते एसेंशियल नुहे एते गुरुत्वपूर्ण नुहे बोली लोक माने भाबी नौथिले सो आई नेवर वेंट टू स्कूल मु विद्यालय गली नहीं आई गॉट मैरिड वेरी यंग ओके वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रेन मु बहुत अल्प समय रे बाहा हे गली एंड मो पाखरे मोर पुओ झियो हे गला चिल्ड्रेन हे गला एंड आई बिकेम वेरी बिजी जेते बेले मु बाहा हे गला पर मोर छुआ पिला हे गला पर मु मध्य बहुत व्यस्त रही गली एंड लेटर I had grandchildren and always felt to the much happiness in cooking and feeding all of you. तो तापर कौन करिछि मो जेते बेले ग्रांड चिल्ड्रेन मोर नाती नातुणी माने हे गले सेते बेले मते बहुत खुशी लागिला बहुत खुशी रे मु से मानक पई कौन करि बारे लागिली रांदी बारे लागिली खुआई देबारे लागिली फीडिंग माने रांदी की खुआई देबा को कौन को आजे फीडिंग बोली को आजे तुम मानक पई रोसे करिबारे एवं खुआइबारे मते बहुत खुशी मिले आनंद मिले बोली से कहउछंती बट at times I used to regret not going to school किंतु वर्तमान मु एबे रिग्रेट करूची रिस्ट्रिक्ट माने कोन रिपेंट ओके रिपेंट माने कोन पछताउची राइट रिपेंट कहि पारो बा पछतावा होउची तांको कोन एबे वर्तमान मते गिल्टी फील होउची कोन पई जे मु काहे की स्कूल गली नाही सो आई मेड श्योर दैट माय चिल्ड्रेन एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन स्टडीड वेल एनो मु रिग्रेट फील होउची मु सिना पढी पारिली नाही हेबे मोर चिल्ड्रेन बा मोर ग्रैंड चिल्ड्रेन माने केमिति भलो भाबरे पाठ पढिबे सेति पई मते बहुत चिंता लागुची मु रिग्रेट फील करूची मु लज्जित फील करूची से कहउछंती कि ग्रैंड मदर करूछंती हेले मु सिना पढी पारिली नहीं मते सुना किए जत्न नेबार लोक किए रहिले नहीं हेले मोर पुओ एवं मोर नाती नातुणी केमिति भलो पाठ पढिबे सेति पई से चिंतित थांती राइट तापर कौन होइछि देख चेक योर अंडरस्टैंडिंग तमे केते बुझिलो सेटा तमे पिला माने चेक करिवो ओके कंप्लीट द कॉज एंड इफेक्ट टेबल गिवन बिलो बेस्ड ऑन द पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट एंड टीचर राइट इट इज योर ड्यूटी टू जस्ट डू आई होप दैट यू माइट हैव अंडरस्टूड सम टॉपिक जे एठी कोन थिला गोटे त्रिवेणी रो स्टोरीटा पढिछंती तापर ग्रैंड मदर केमिति ओके तांको स्टोरीटा नेरेट करिछि जो गर्ल्स पाखरे से विषय कहा गला एबे वर्तमान आमे सेकंड पार्टटा को पळेबा राइट ओके आमे सेकंड पार्टटा मध्य पढि देबा ए पाठरे गोटे पाठरे आमे निश्चित सरी देबा पिला माने जदी ए वीडियोटा जदी आपण मान को लाइक करूछि तबे प्लीज नेक्स्ट पर्यंत भी देखि नियंतु ओके आ जदी कोनोसी पढ़ाइबारे कौनसी असुविधा होची बुझीबारे कौनसी असुविधा होची कमेंट करो मु तुमको प्रांजल भाव आउ थरे मध्य कहि देबी राइट ओके सी इन द सेकंड पार्ट 1 इज ओवर ग्रैंड मदर कहले मु सिना पढ़ी पारिली नाही हेले मो पुओ झियो केमिति भलो भाबरे पढ़िबे मो नाती नातुणी केमिति भलो भाबरे पढ़िबे सेति पय मु सब बेले यत्नशील अछि बोली किए कहउछंती एई ग्रैंड मदरटा कहउछंती राइट ओके देखन I could not understand why my 62 years old grandmother was telling me a 12 year old the story of her life in the middle of the night अरे बा एटा वास्तविक जिनिस जे ए बुढ़ी केते वर्ष होईछि 62 years old ओके सॉरी ओके 62 years old lady जने 12 वर्षर झियो को काहे की स्टोरी मध्य रात्रि कहउछंती तो ए जो 12 वर्षर झियो आज 12 वर्षर झियो केते हेथिबे 12 वर्षर झियो हार्डली 7 स्टैंडर्ड रे थिबे राइट 7 या 6 स्टैंडर्ड रे थिबे ए 7 या 6 स्टैंडर्ड रो झियो को ए 62 वर्षर जने वृद्ध महिला काहे की कहउछंती आई एम एक्सट्रीमली सॉरी
जेहेतु लाइट पलैछि सेकेंड चैप्टर सेकेंड यूनिट को मु पुणी थरे कंटिन्यू करी ओके एठी मो वीडियोटा रखी डियर फ्रेंड वेलकम बैक इट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ योर क्लास 9th लेसन हाउ आई टॉट कावेरी बहिर कौन अच्छे हाउ आई टॉट माई grandmother how I taught my grandmother to read how I taught my grandmother to read ए लिखी छंदे किए सुधा मूर्ति who is the writer सुधा मूर्ति कर नाइस राइटिंग टा तो आपण माने फर्स्ट पार्ट देखि थिबे फर्स्ट पार्ट रे मु कहिछि जदि देखि नथिबे फर्स्ट पार्ट को देखि दियंतु जे गोटे कहानी अच्छी फर्स्ट पार्ट रे मु कोन कहथिले गोटे कहानी अच्छी कोठिकार कहानीटा जोटे कि काशी यात्रा विषय रे तो ए काशी यात्रा को राइटर ग्रांड मदर शुणा बहुत आग्रह प्रकाश करिसंती तो से ता स्टोरीटा कहूँ गोटे ओके समर सीजन समर नाइट रे आफ्टर डिनर परे तो जेते बेले राइटर छोट थांती 12 वर्ष थांती से समय रे से गोटे टेरेस रे कौन करथांती सोई थांती समर नाइट आफ्टर डिनर ओके तो से समय से कहते मु जेते बेले छोट थिला बेले को मो माँ मरी जाइछंती मो माँ मरी गला पर मो बापा सेकेंड मैरिज करिसंती एवं मो बापा जेते बेले सेकेंड मैरिज करदेले मते कम बयस रे विवाह करबा को पड़िथिला कम बयस रे बाहा हेइथिली एंड तापर मोर पुओ जो होगला पर तांकर रोसे करवा खुआई देवा से मानको जत्न नेबारे व्यस्त रही हेले आज मु चिंता करुचे जे से मानको केमिति भल भाव में पाठ पढ़ी पारे से माने केमिति भल रे से चिंता करी मु आज वृद्धा हो जाइछि बा 62 इयर्स हो जाइछि 62 इयर्स ऑलरेडी हो जाइछि तो ए कहानी जेते बेले कहउछंती सेते बेले हमर राइटर टिके आश्चर्य प्रकाश करुछंती देखंतु ए सेकंड पार्ट रे कोन कहउछंती राइट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई माय 62 ईयर ओल्ड ग्रैंडमदर वाज टेलिंग मी ए 12 year old the story of her life in the middle of the night तो से बुझी पारिलेनी जे एक्चुअली वास्तव में मते कहीं गोटे 12 वर्षर छुआ को ए 62 वर्ष बयसर वृद्धा महिलाटा कहीं मते ए स्टोरीटा कहूचे ता अतीत रे कौन होता एक्चुअली जनरली द किड्स डू नॉट अंडरस्टैंड और डू नॉट ट्राई टू लिसन द टॉक ऑफ the old woman or old man but what had happened एठारे कौन है देखंतु but I knew I loved her immensely and there had to be some reason why she was talking to me तो से वर्तमान कहला जे मु मो ग्रैंड मदर को इमेंसली भल पाए बा एक्सट्रीमली भल पाए इमेंसली माने एक्सट्रीमली सो आई इमेंसली और एक्सट्रीमली लव माय ग्रैंड मदर सो डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम रीजन व्हाई शी इज टेलिंग me the story what is the reason behind it so that she is telling me the story so she realized who realized the author realized the narrator realized and I looked at her face mu ta face ko dekhili and it was unhappy and her eyes were filled with tears ta आखिरे लुह छल छल होताए आसु बाहरी आसु थाए एंड शी वाज ए गुड लुकिंग लेडी एंड हु वाज यूजुअली ऑलवेज स्माइलिंग सो शी लुक्स सो ब्यूटीफुल शी इज ए गुड लुकिंग लेडी एंड ऑलवेज स्माइलिंग लेडी ऑलवेज शी स्माइल बट टुडे even today I cannot forget the worried expression on her face so आज मत मु भूली पारिउ नाही जे ता मन भितरे केमिति एक्सप्रेशन अछि केमिति अनहैप्पी एक्सप्रेशन अच्छी ओरिड हैप्पी ओरिड माने विचलित अच्छी विचलित अवस्था देखा जाउछि काहे कि एंड आई लीन्ड फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड मु ताकू लीन करी गली लीन माने टिके नई जाइके ता हाथ को धरिली का हाथ को धरिली ओके द राइटर होल्ड हर ग्रैंड मदर्स हैंड राइट आउ कौन कहला आभा डोंट क्राई What is the matter? Can I help you in any way? See, the 12 years old
child is asking Ava, mother, don't cry, କାନ୍ଦନା କାନ୍ଦନା କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣାଟା କ'ଣ ହେଇଛି can I help you in any way ମୁଁ ତୋତେ କହୁ ଓକେ ତୁମକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି କି କିଏ କହୁଛନ୍ତି the little child okay little child 12-year child is asking her grandmother Ava can I help you in any way then what is the reply from the grandmother grandmother said yes I need your help हाँ ମୁଁ ତୋର okay help ଟା ଆଶା କରୁଛି I need your help and you know when you were away तू ଜାଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ତୁ ବାହାରେ ଥିଲୁ कर्मवीर came as usual कर्मवीर is a episode कर्मवीर is what the weekly magazine came usually सबु बेले से आसुथिला I opened the magazine से magazine को मु जेते बेले open कली खोलिली I saw the picture that accompanies the story Kasi Jatra and I could not understand anything that was written so what had happened dear child when you were a front or away from my house at that time Karmavira a magazine usually comes to me but I did not able to read it only I saw the picture but I did not understand okay the story is Kasi Jatra but I could not understand anything was written so many time I rubbed okay many time I rubbed my hand over the page okay so many time I rubbed my hand over the page okay wishing they could understand that was written से आशा करुथिले जे काले मु जदि पढ़ी पारंते कि केमिति हुअंता right but I knew it was not possible it is not possible because I am illiterate I can see the picture I can understand it may be the Kasi Jatra because all the pictures were from Kasi so that I tried my best to study I tried my best to understand the story but I did not understand if only I was educated जदि मु शिक्षित हेथांती educated enough I waited eagerly for you to return ओके जदि मु एजुकेटेड हेतांती मु पढ़ी पारुथांती एणु मु तोते इगरली आग्रहर सहित अपेक्षा करथिली जे तू केबे फेरी आसीबू बोली राइट आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी तो तू जेते जल्दी आसी थांतु एवं मो पाई जदि पढ़ी दे थांतु तेबे मु बहुत खुशी हे थांती बोली ग्रैंड मदरटा ता ग्रैंड चाइल्ड को कहउचंती I even thought of going to the village and asking you to read for me आ बेले बेले आ मु कोन भाबुथिली मते बेले बेले थॉट आसुतिला भावना आसुतिला जे मु से गाँ को जो मैरिज पार्टी जाई थांती छुआटा मु से गाँ को चली जीवी एवं कही थांती तोते कही थांती जे मो पई एई कर्मवीर बा काशी यात्रा स्टोरीटा पढ़ी दे बोली कही थांती हेले मु साहस कली नहीं I could not have asked somebody I could not have asked somebody in the village but I was too embarrassed to do so मु गाँर कहा कहली नहीं कारण न कहबार कारण मते एम्बारास फील लागुतिला एम्बारास मीन्स कौन जोटा कि मते खराब लागुछि मते लज्जित लागुछि बा मते ऑकवर्ड फील हेबो बोली मु कहा कहली नहीं I felt very dependent and helpless एणु मु निजे को गोटे भाविली जे मु गोटे वर्तमान कौन डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस ओके अन्य ऊपर निर्भर करूछि एवं मु गोटे हेल्पलेस हो जाइछि जे कि मते सहाराहीन भाव रे हो जाइछि जेहेतु मो पाखरे सब किछि अछि हेले मु पढ़ी पारुनी बोली कोन हो जाइछंती से डिपेंडेंट हो जाइछंती एवं हेल्पलेस मने करूछंती सो वी आर वेल ऑफ but what use is the money when I cannot be independent so the grandmother is saying that we are well off means what wealthy right well off means wealthy
ओके जार धन संपत्ति बेसी थाए ताहाकू वेल ऑफ बोली कुआ जाए वेल्दी बा रिच बोली मध्य कुआ जाए वी आर रिच फैमिली वी हैव एवरीथिंग वी हैव मनी वी हैव बंगला वी हैव गाड़ी वी हैव एवरीथिंग बट व्हाट यूज ऑफ मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट मु जदि स्वतंत्र हो पारिबी नाही इंडिपेंडेंट हो पारिबी नाही तो तबे ए पैसार लाभ कौन बोली ग्रैंड मदर टी कहउछंती सो आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर तो मु बुझी पारिलिनी एटी आई किए एटी हला राइटर हु राइटर किछि बुझी पारिले नाही मु कोन उत्तर देबी ए बुढ़ी माँ को बा मो बुढ़ी माँ को मु कोन उत्तर देबी किछि बुझी पारिलेनी किंतु से ओके कोन भाबी कि कहले आभा कंटिन्यूड आभा चल कहि चल माँ कहि चल ओके सो आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड तो से कहला जे मु काली ठारू कौन करबी आई वांट मु चाहे ओके मु डिसाइड करिछि आई हैव डिसाइडेड मु डिसाइड करिछि तो आई वांट टू लर्न कन्नड़ अल्फाबेट काली ठारू मु कन्नड़ अल्फाबेट टा सिखिबी कौन कन्नड़ अल्फाबेट सिखिबी काली ठारू सिखिबी एंड आई विल वर्क वेरी हार्ड मु कठिन परिश्रम करिबी बहुत परिश्रम करिबी एवं आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग द दशहरा एज द डेडलाइन ओके जो दिन दशहरा हॉलिडे थिबो दशहरा समय थिबो दशहरार सरस्वती पूजा बेलकु मु एई अल्फाबेट कंप्लीटली शिखी जाइथिबी बोली मु दृढ़ प्रतिज्ञा करूछि बोली ग्रैंड मदर टी कहले काहाकू कहले राइटर को कहले राइटर एट दैट टाइम एट व्हाट एज एट दैट टाइम राइटर रो बयस हे थाए 12 वर्ष राइट 12 वर्ष होता है तो सेते बेले ग्रैंड मदर कहले मु कठिन परिश्रम करी एवं दशहरा पूजा सुधा मु डेफिनेटली सरस्वती पूजा दशहरा भीतर को मु निश्चित रूप से अल्फाबेट शिखी जीवी बोली से डिसाइड कले एंड दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड द नोवेल ऑन माय ओन से दिन भितर मु नोवेल को प्रांजल भाव में केमिति पढ़ी पारिबी सेति पई से दृढ़ प्रतिज्ञा कले राइट आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट मु चाहूँगी मु केमिति स्वतंत्र रही हाउ टू बी इंडिपेंडेंट माई सेल्फ विदाउट डिपेंड ऑन अदर टू रीड समथिंग राइट सो आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस एंड येट आई laughed एट हर ओके तो आई मीन्स किए राइटर नेरेटर से देखिले तार डिटरमिनेशन दृढ़ प्रतिज्ञा से केमिति दृढ़ प्रतिज्ञा दृढ़ मना होती से देखिले ता फेस रे येट तथापि मु ता उपरे हसिली ताच्छल्य करिली राइट ता उपरे ओके लाफ्ट एट हार मीन्स ताकू ताच्छल्य करिकि मु हसिली आउ कोन तापर मु कोन कहली यू कैन सी दैट ओके तापर से ताच्छल्य करी हसिकी कहले आभा okay Abha at this age of 62 you want to learn the alphabet हैं माँ अभा तोते 62 वर्ष हेलानी एबे तू कौन अल्फाबेट शिखिबो राइट सो यू ओके all your hair is grey तोर सबु बाल गुड़ाक पाची गलानी राइट ग्रे सबु बाल पाची गलानी your hands are wrinkle हाथ गुड़ाक कुंचु कुंचिया हे सारिलानी and you wear spectacle and you work so much in the kitchen तो वर्तमान तोर कौन बाल पाची गलानी हाथ गुड़ाक कुंचु कुंचिया पड़ी गलानी आखिरे चश्मा पिंधि सारिलुनी आम पई बहुत काम करूछु एणु एबे वर्तमान तू अल्फाबेट शिखिबु So it was very ridiculous. Okay, the girls laughed at her, mocked her, मन तात्सल्य करी हसिला. तो childishly, okay, गोटे छुआ भली भाबरे I made fun of the old lady. मु गोटे छुआ मानक भली मोर गोटे वृद्ध महिला को वृद्ध लोकन को मु तात्सल्य करी हसिली. But she just smiled. किंतु से मते किछि रागिले नहीं स्माइल कर देले हसी देले राइट हसी देकी कहले फॉर ए गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड देन यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टैकल जदि भल काम पाई जदि डिटरमाइन अछ प्रतिज्ञाबद्ध अछ बा शक्त मन दृढ़ मनोबला अछ तेबे यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टैकल जे कोनोसी ऑब्स्टैकल जे कोनोसी कष्ट बाधा विघ्न आसुना कहीं जदि भल पाई चिंता कर तुम ताकू ओवरकम कर ताकू कौन
ताकू हैंडल करि पारिबो राइट आई विल वर्क हार्डर एंड देन एनीबडी बट आई विल डू इट मु अन्य लोक ठारू अधिक परिश्रम करी हेले निश्चित रूप से मु करिकी देखेबी कौन मु पूजा वेकेशन भितर मु कौन शिखिबी अल्फाबेट शिखिबी एवं दशहरा बिलकु पढ़ी पारुथिबी बोली से स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन नहीं गले किए ओल्ड ओमेन ओल्ड लेडी एंड फॉर लर्निंग देर इज नो एज बार शिखिबा पई कोनोसी एज बार नाही शिखिबा पई कोनोसी बयस नाही बयस सीमा किछि हमको ऑब्स्टैकल करि पारिबो नाही बोली किए कहले द ग्रैंड मदर ऑफ द राइटर ओके सो सी what is strong determination made by the okay old omen the next day onward asanta kali tharu I started my tuition ava was wonderful student okay it is a very beautiful things right okay I started my tuition right tuition so you can say that tuition tuition right so somebody make blunder that tuition right some people write like this but it is wrong pronunciation or wrong okay writing this is tuition tuition mu asanta kali tharu aba mu tote tuition पढ़ेबी and you are my wonderful student you will be the my wonderful student right the amount of homework she did was amazing yeah so jete bele eha ko पढ़ाई दउथिले सेते बेले she was very wonderful okay she was surprise बहुत surprise हे जोथिले amazing हे जोथिले काहे कि she would read and repeat write and recite से कौन करथिले पढ़ुथिले रिपीट करुथिले लेखुथिले एवं पुनी थरे रिसाइड करुथिले पुनरावृत्ति करुथिले किए ग्रैंड मदर ओके सो व्हाट शी वाज डूइंग शी वुड रीड से पढ़ुथिले रिपीट करुथिले पुनी थरे पुनरावृत्ति करुथिले लेखुथिले आ पुनी ताको रिसाइड करुथिले बार बार रिसाइड करुथिले सो आई सॉ हर ओनली टीचर एंड she was my first student so I was her only teacher I was her only teacher mu तार गोटे मात्र शिक्षक थिली and she was my first student से मोर प्रथम स्टूडेंट थिले right and a little did I know then that one day I would become a teacher in the computer science and teach hundred of students सेही दिन ठू little I did I know मु सेते बेले अल्प जानी थिली जे से कहउचंती अल्प टिके जानी थिली जे one day I would become a teacher मु दिने कोन गोटे टीचर है जीबी एवं शह शह छात्र छात्री माननकु कंप्यूटर साइंस पढ़ेबी बोली से भाबी नहीं थिले राइट द दशहरा फेस्टिवल केम देख एबे वर्तमान दशहरा फेस्टिवल आसी जाइछि पूजा सरी जाइछि सरस्वती पूजा सरी जाइछि केम यूजुअल एंड सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रा मु सीक्रेटली गोटे काशी यात्रा नोवेलटा मु किणी आनली सीक्रेटली माने लुचे के मु किणी आनली मु मो ग्रैंड मदर को देखैली नाही एंड व्हिच had been published as novel by that time से समय से रिसेंटली से नोवेलटा पब्लिश होई थाए एंड माय ग्रैंड मदर कॉल्ड मी मो ग्रैंड मदर मते डाकिले किए डाकिले ग्रैंड मदर डाकिले कहा को डाकिले ग्रैंड डॉटर को डाकिले आ ग्रैंड डॉटर मदर सीक्रेटली गोटे कोन गोटे काशी यात्रा बहिटा किणी आनी छंती एंड टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन द स्टूल ओके तापरे ता ग्रैंड मदर ताकू डाकी छंती एवं पूजा प्लेस जोटी पूजा स्थान रे तांकू बसैले मेड मी सिट डाउन माने बसैले सिट डाउन माने बसिबा मेड सिट डाउन माने बसैबा ओके किए बसैले ग्रैंड मदर मेड हार सिट डाउन ऑन द पूजा प्लेस ऑन ए स्टूल गोटे स्टूल ऊपर बसैले एंड सी गेव मी ए गिफ्ट फ्रॉक मटेरियल से मते गोटे गिफ्ट देले किए गिफ्ट देले ग्रैंड मदर गिफ्ट कौन गिफ्ट देले फ्रॉक मटेरियल फ्रॉक रो कोनाटी गोटे गिफ्ट देले एंड देन सी डिड समथिंग अनयूजुअल तापर गोटे अनयूजुअल कामटा करदेले अनयूजुअल काम माने साधारणतः सेमिति काम केबे हुएनी सेमिति काम करिकी देखैदेले किए ग्रैंड मदर को टाइप रो अनयूजुअल काम देखिबा ओके सी बेंड डाउन नई पड़िले एंड टच माय फीट
कथा तो शुणिबारे मते निश्चित कांद लगुच जे 62 बयसर गोटे वृद्धा जेतेबेले शिखिछंती तो ता नातुणी पाखरे से कौन करिसंती नातुणी पाखरे बसी जैसे तांको नी को बेंड करिकी ता नातुणी फीट को छुईंट ता फीट को छुईकी नमस्कार टे करिसंती प्रणाम टा करिसंती सो इट इज डेफिनेटली अनयूजुअल एंड आई वाज सरप्राइज एंड टेकन अबाक मते सरप्राइज लागिला मते आश्चर्य लागिला किए कहउछंती राइटर कहउछंती नरेटर कहउछंती ओके सो मो आखिर मध्य टीयर आसी जाउछि सतरे वास्तव जिनिस आई एम आल्सो फील ऑकवर्ड एंड आई एम क्राइंग राइट जस्ट आई एम डेफिनेटली द टीयर इज कमिंग आउट ऑफ माय आई आल्सो तो एटा गोटे सरप्राइज करदेला क्या राइटर को सरप्राइज एंड टेकन एबाक माने से आश्चर्य हो गले काबा हो गले राइट सरप्राइज बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड यस शी हैड नेवर सीन सच एन इंसिडेंट दैट ए ओल्डर पर्सन कैन बो ऑन द फीट ऑफ ए यंगर वन ए लिटिल वन राइट सो अबाक हो गए टेकन अबाक एंड एल्डरली नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर गोटे बड़ बड़ लोक माने एल्डर्स माने वृद्ध लोक माने गोटे यंगस्टर मानकर फीट को केबे मध्य टच करती नहीं छुअंती नहीं एटा हमर कल्चर रो बाहर किंतु वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड एल्डर्स एंड टीचर्स आमे सबु बेले कौन करि थाउ भगवान कर पाद को छुई थाउ बड़ लोक मानकर पाद को छुई थाउ एवं गुरुजन मानक पाद को छुई थाउ हेले एंड वी कंसीडर दैट द मार्क ऑफ रेस्पेक्ट आमे जदि भगवान बड़ लोक किंबा टीचर रो पाद को छुई कि नमस्कार करिबा तेबे यहा रेस्पेक्ट ओके यह गोटे रेस्पेक्ट बोली गणना करा जाय थाए राइट आई होप दैट आपण माने बुझी पारुथिबे एंड इट वाज ए ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रेवेंस ओके रिवर्स हैड हैपेंड तो एटा गोटे आमर गोटे परंपरा ग्रेट ट्रेडिशन माने परंपरा किंतु एबे एटा वर्तमान रिवर्स हो जाए रिवर्स माने कौन छोट बड़ लोकटा छोट लोकंकर पाद को छुईचंती मा उल्टा हो जाए रिवर्स हो जाए रिवर्स हैपेंड एंड इट वाज नॉट करेक्ट एटा ठीक आदो ठीक नुहे एटा जमा भी ठीक नुहे बोली किए द लिटिल चाइल्ड रियलाइज इट and she said I am touching the feet of my teacher of a teacher देखंतु सी माने किए ग्रैंड मदर आभा कहले जो कौन कहले जे आई एम टचिंग द फीट ऑफ ए टीचर मु गोटे गुरु रो फीट को छुची ओके नॉट माय ग्रैंड डॉटर मोर नातुणी रो फीट को मु छु नाही वर्तमान मु कार फीट को छुची मोर टीचर मोर गुरु रो फीट को मु छुई की प्रणाम करूछि ए टीचर हु टॉट मी सो वेल गोटे टीचर गोटे शिक्षक मते अति सुंदर भाबरे अति प्रांजल भाबरे पढ़ेला एंड विथ सो मच ऑफ affection that I can read any novel confidently in such a short period ए छुटिया अल्प समय मोर गुरु मोर शिक्षक एते सुंदर भाव में पढ़ेले जे आज मु नोवेल को इजीली एवं कॉन्फिडेंटली पढ़ी पारु अछि राइट नाउ आई एम इंडिपेंडेंट वर्तमान मु स्वतंत्र वर्तमान मु स्वाधीन एंड इट इज माय ड्यूटी टू रेस्पेक्ट ए टीचर एणु यह मोर कर्तव्य मोर ड्यूटी मोर कर्तव्य जे मोर शिक्षक को मु केमिति रेस्पेक्ट करिबी इट इज माय ड्यूटी टू रेस्पेक्ट माय टीचर राइट एंड is it not written on our scripture that the teacher should be respected irrespective of gender and age so आमर जो धर्म ग्रंथ मानकरे लेखा जाइछि आम धर्म ग्रंथ रे कोन लेखा जाइछि आम धर्म ग्रंथ रे आम ग्रंथ मानकरे लेखा जाइछि आम स्क्रिप्चर रे लेखा जाइछि जो टीचर शुड बी रेस्पेक्टेड शिक्षक मानकु सम्मान देबा निहाती दरकार एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज से मानकर जेंडर जहाँ भी हो ना कहीं से मानकर ओके स्त्री हंतु पुरुष हंतु या जो जेकोसी एज रो ना ताहा छोट हंतु या बड़ हंतु टीचर ऑलवेज बी टीचर वन हु टीच इज ए टीचर एणु तांको सम्मान देबा निहाती दरकार सो आई डिड रिटर्न हार ओके नमस्कारा तो आई डिड रिटर्न हार नमस्कारा टू हार बाय
touching her feet and gave my gift to my first student. See, in return, the child is also did her namaskar touching on her feet. तार जेजे मार feet को स्पर्श करिकी नमस्कार करिकी से ता गिफ्ट देला. ता गिफ्ट कौन थिला? ता गिफ्ट थिला जो काशी यात्रार नोवेल रिसेंटली पब्लिश होई थाए. राइट कौन? सो सी ओपन्ड इट एंड read immediately the title काशी यात्रा. काशी यात्रा by त्रिवेणी. काशी यात्रा by त्रिवेणी. And the publisher name what? Triveni. The title was Kashi Jatra. And I knew then that my student had passed with the flying color. My student had passed with the flying color. That means what is that flying color? Flying color, wildly. So the writer, who is writer? Sudha Murthy. Sudha Murthy became so elated, so glad. Okay, by glad that her student was passed with correct with flying color, right? I hope that this video will be very helpful for you and you loved this video. If you loved this video, please do not forget to like, comment and share. I will bring the next video in upcoming video. Okay, thank you, all the best and happy learning.